गुड डे टू ऑल। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। कन्वेंशनली आई एम एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एट बॉम्बे सिंस 48 ईयर्स। और आज मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग सो मेनी जूनियर एडवोकेट्स ऑल्सो एंड लिटिगेंट्स ऑल्सो। एक्चुअली मैं एक क्रिमिनल मैटर तैयारी कर रहा था जो so I was searching for some judgment, or I came across one of the judgment of Supreme Court. Now, there are transactions where it can be civil claim for recovery, and it can be also considered as a cheating or a breach of trust. Now, depending on the facts of the case, in this particular case, according to me, was definitely a clear-cut cheating and a breach of trust. But while drafting the complaint, there should be certain care should be taken that the drafting should reflect the mens rea. उनका जो एक्यूज बनाया है उसका इंटेंशन ये ट्रांजेक्शन के पीछे शुरुआत से ही क्या था। नाउ आई जस्ट जजमेंट तो बहुत बड़ा है, पर मैं शॉर्ट में आपको बोलूँगा कि एक पार्टी ने एक प्रॉपर्टी लेने के लिए सम टोकन मनी एडवांस में दे दिया, एंड देन डेट वाज फिक्स कि ये तारीख को जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे एग्रीमेंट का। जो परचेजर था वो जाके सब रजिस्ट्रार में खड़ा रहा, बट सेलर डिड नॉट कम। बहुत टाइम, पूरा दिन 4-5-6 घंटा राह देखने के बाद ही के वक्त क्यों वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। और अल्टीमेटली देन ही कॉन्टेक्टेड द पर्सन के क्या हुआ क्या नहीं। तो उसकी बातों से पता चल गया कि उनको कोई इंटेंशन नहीं था, जो टोकन मनी दिया था वही उसको हड़प करना था। नाउ ये होता रहता है, बट देन क्रिमिनल कंप्लेंट वाज मेड बाय द इंटेंडेड परचेजर अगेंस्ट द सेलर। नाउ some or other the process was granted and matter was heard, but the person who was going to sell the flat preferred a quashing petition कि भाई ये सिविल लायबिलिटी है और उसको पैसे के लिए सेपरेट केस करना चाहिए। बाय दैट टाइम 3 साल पूरा हो गया था, तो सिविल लायबिलिटी वॉज टाइम बार्ड। सो द पर्सन जिसने पैसा दिया था वो रियली फाइटिंग के भाई नहीं, इसमें अपने को जितना ही चाहिए। इन हाई कोर्ट लकीली द हाई कोर्ट सेज कि यस ऑफेंस इज क्रिएटेड, सो क्रिमिनल कंप्लेंट इज मेंटेनेबल। अगेंस्ट दैट द सेलर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गोइंग थ्रू एंटायर फैक्ट्स pleaded in the complaint and came to the conclusion that the basic elements of cheating or breach of trust is missing in the complaint as well as in the evidence, and therefore this cannot be treated as a criminal complaint, and the order was set aside. Now the problem came that civil case was already time barred. So what to do? First of all, my advice is that even if you file a criminal complaint, many times, even check bounce case, we file criminal complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act. Good. But we should be careful also कि civil case don't get time barred. On some technicalities, if you fail in the criminal case, तो civil case time barred हो गया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। Simultaneously, both the things can be done. So one should be careful. Now, I am not blaming the advocate we must have drafted. I am not here to criticize anybody, but then drafting should be such that initially by reading the complaint itself, it should create an impression that yes, the intention was to cheat, and then the proforma, whatever documents are prepared, everything, though it can be treated as a civil, but if your drafting is proper and the evidence is proper, the criminal liability can be established
even in the transactions where the recovery suit also is one of the option. So take care and just consider this as a very important judgment. I'll give the citation. It is a old judgment. It is decided on 3rd May 2023, Supreme Court में Kunti versus State of UP is the 6th Supreme Court cases 109 पे. It is also registered. So you can go through the detail. Any person having any question can also refer to me. I am available to them to solve their problem. Thank you.